love myself. पीछे वाले दोनों आपके नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार. देखिए फिल्म का जब टाइटल ऐसा होता है तो एकदम मूड अलग हो जाता है, ऐसा लगता है कि शादी का माहौल है और ऐसे ही आए हैं हम. पहले तो I'd like to thank the members of our media. Thank you very, very much for taking the time out. I know it's a Sunday and it is not something that is the regular norm to launch a trailer on a Sunday, but we're very appreciative on behalf of the film that you took time out on a Sunday to be here today. और भारी मात्रा में आप सब आए हैं तो उसका हम तहे दिल से आप सबको शुक्रिया कहना चाहेंगे. And to all the amazing people that make and believe in us, all the wonderful fans up there, thank you so much, guys. You bring so much love and energy into this house. And to all of you, I just have to say one simple thing, ke bhaiya Jugjug Jio. To all of you. To all of you, your families and loved ones, and of course the same wish extends to all the prolific members of the media in the house. We are here, it's the 22nd of May, and in exactly a month and 2 days, Jugjug Jio will release at a theatre very near to you. And today is a big day for us because we officially launch the theatrical trailer of Jugjug Jio that has an outstanding cast and crew. Now, because we are so excited about our film and because we think that you have to see it not once but twice, we will show you the trailer twice so that you relish each and every moment. And after that, of course, we will call members of the cast and crew on stage and then the party will begin. But before that, ladies and gentlemen, boys and girls in the house, I present to you the trailer of Jugjug Jio. And I know all of them are looking stunning, but we may have to move them for you to see it. Hello, hello. Nikalo. They are also looking so excited. Look at their expressions on this poster. इसके पहले इन्होंने कभी ट्रेलर रिलीज नहीं किया. अरे निकालो ना भैया. अच्छा मुझे जाना पड़ेगा. अच्छा ठीक है. I'll go. हाँ. Give it up then, Jugjug Jio. Oh, I can't see you. Oh, there he is. How are you? Long time. कैसे आप? How are you? Long time. Yeah. Haven't seen you in so long. How you been? Everyone okay at home? Okay. Ladies and gentlemen, that was the trailer of Jugjug Jio, releasing at a theatre near you on the 24th of June 2022. Now, of course, behind the making of any motion picture is the tremendous hard work of the entire cast and crew and the pillars that support the film, right from its inception to its final execution. We are very honored and privileged to have major members of the cast and the crew with us who have worked relentlessly so that we can have this film out. In fact, this is one of those rare films that was shot entirely during the pandemic. And so kudos to the cast and crew who actually not only combated COVID, had COVID, recovered from COVID, and are still here to tell the tale. So we thank them all. I'd like to begin by calling on stage Mr. Ajit Andhare, ladies and gentlemen, the COO of Viacom 18 Studios. Viacom has been a huge collaborator with Dharma Productions, and we're very honored to have you here, sir. Ajit, welcome, and Jugjug Jio to you too. Your thoughts, Ajit, on not only your collaboration with Dharma, but also on the film that we have on hand. See, I think a lot has been said about Bollywood recently, Hindi films, if I had to say. And Virat Kohli also has been in a bit of an indifferent form. So I think you need that one innings, right, to get back. And I think this is that innings. So Bollywood, Hindi films, कई जुगों से जीती आ रही हैं और जुगों तक जिएंगी. जुग जुग जियो. I think this is the answer. Great, thank you, Ajit. Thank you, and
we've had a huge last Friday, and we hope the streak continues. So we're very, very excited. Thank you, Ajit. Thank you for that. Please have a seat. Ladies and gentlemen, I'd like to also call my partner in crime, the CEO of Dharma Productions, Apurva Mehta. And Apurva may have to adjust his jacket because there's something been stuck on you. Apurva, well, we've been on a journey together for, of course, 18 years, and we've not only fought highs and lows, but even a global pandemic. And now we're here with a very, very special film. What do you have to say? I have to say, firstly, it's so amazing to be back in the theaters after 2 years and seeing all of you guys here. And we couldn't have come back with a more perfect film than Jugjug Jio because it really epitomizes everything that Dharma stands for. Color, fun, song, dance, humor, emotions. And all of this done by an extraordinary cast of actors. We've got Anil sir leading the cast, Neetu Singh, who's working the first time with us, our lovely student Varun Dhawan, the most gorgeous Kiara Advani, the very humorous Manish Paul. So I think we have a huge winner on our hands and very, very excited, Raj. Thank you for this wonderful film. Thank you, Apurva. Please have a seat. We're very, very grateful for everything that this film has been through and will continue to. And now, the captain of the ship has been working with us. He started his journey as an assistant, very much an outsider to the business. I worked with filmmakers like Shashank Khaitan and Shakun Batra. He did Out of the Park with his debut film, which released in 2019, Good News. Brought so much good news to our company, to the actors of that film, to him as a potentially amazing filmmaker for the future. I, with a lot of love and pride in my heart, would like to invite on stage Raj Mehta at his second outing with Jugjug Jio. Check. Raj, 2019 में दिलों पे इतना राज किया आपने और आज यही एक विश के साथ आप आए हैं कि सारी दुनिया सारा जहां जुग जुग जिए तो आपके क्या ख्याल हैं? I'm just very nervous, Karan, honestly, because of the times we're in and the fact that we've had such a long journey and such a difficult journey with the film. So I just hope all of it is worth it at the end of it and people just like the film. That's all I can say. Well, that's every filmmaker's desire. But I have to tell you, he has really worked so hard and fought so many obstacles, like I had mentioned earlier. And Raj, the proof lies in the pudding, and no amount of labor is ever lost with an audience or any viewing member of our special film. Thank you, and please have a seat. Thanks. So, okay, so I have a very special relationship with the actor I'm going to call on stage. I've been with him on so many stages that I possibly have forgotten. We've lost count, from being on reality shows to award shows. He's had the gall to say so much this Paul to me and get away with it. He actually has been amazing, and I always say that every time I've hosted with him and been on a stage, he's been amazing and the easiest to work with, and I believe this is a breakthrough moment for him at the movies. Ladies and gentlemen, put your hands together for Manish Paul. मनीष, कैसा लग रहा है? अभी शादी में होस्ट बन के और अभी यहाँ आए हैं एक्टर में. मुझे इतनी आदत होगी होस्ट करने की, मुझे पहले लग रहा था मैं वापस होस्ट करूंगा, बट इट फील्स सो गुड. करण जौहर इंट्रोड्यूसिंग यू मैन. एक बार जोरदार तालियां सर के लिए पहले. ऑनेस्टली मैं तो दिल्ली का लड़का हूँ यार. आई थिंक इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है. हम लोग सब जब दिल्ली से आते हैं, हम लोग हीरो बनने आते हैं, काम करने आते हैं. आई थिंक इट इज द बिगेस्ट कर्मा ऑफ माई लास्ट लाइफ दैट मुझे धर्मा में काम करने का मौका मिला है. Really, because I think thank you so much sir for this, because I think it's a very special film. हमने बहुत मेहनत करी है. कोविड की दिक्कतें भी आई और बहुत सी दिक्कतें आई, बट आई थिंक बेस्ट चीज़ होती है दिक्कत के बारे में सोचना नहीं चाहिए. हम आप लोगों के लिए एक एंटरटेनर बना रहे हैं, सो प्लीज़ पूरी फैमिली के साथ जाके देखना और प्यार देना. थैंक यू वेरी मच यार. We love you, Manish. Please have a seat. I grew up watching their movies. I grew up watching Rishi Kapoor and Neetu Singh movies.
I grew up loving them madly to the extent that I made my father buy me all those sweaters that Chintuji wore right through his amazing and prolific career. Every time I saw them, I felt like they were mine, they belonged to me. And many years later, I remember in an emotional conversation with Neetu ji, I said, you have to come back because you're beautiful, you're special, and there's no one more amazing. You light up the screen. And she has. She lit up our film. She lit up the screen. She came back with love in her heart and a legacy that is unmatchable. Ladies and gentlemen, put your hands together for Neetu Kapoor. Neetu ji, Hello, Karan. I love you. I love you too, so much. And I'm so happy you're here and everything worked out. I cannot be more thankful to anyone than you because you're the one who pushed me and you said that you've got to work. Yeah. And I can't tell you that was the best decision for me and for you to push me. Thank you. No, and Always. we are honored and privileged. And as I said, you carry with you such an abundant and an amazing legacy. And I know that Chintuji is going to just be so proud of everything that you're doing. And we are blessed just to have known him, worked with him, and have him in our being even today. Yes, thank you. And I'm sure he's going to feel very happy seeing this movie, this beautiful film that Raj has made. This movie is always going to be so special to me. And because this is like, I'm coming back, with the Hindi film. And we love you, Neetu ji. I'm very excited, very excited. और ये तो बनता बोलना बनता है शादी मुबारक वैसे आपको और आपकी बहू रानी और आपके बेटे को हम यही कहेंगे कि जुग जुग जियो. Neetu ji, we absolutely love you. Thank you so much. And I'm sure everyone has many questions, but I would love for you to take a seat. Undoubtedly my first friend in the business. And I mean that. Me and Aditya Chopra were at a party once and no one was talking to us. And literally because we were young and just excited to be at a film party. And then there was a superstar who walked towards us and only hung out with us. From then on, I felt love for him. That love just grew into more love. Respect remained. But the fact that he is the youngest man I know even today and works with the energy of a millennial just speaks for itself. There is nobody, and I repeat, nobody that can match the energy of this outstanding artist, Anil Kapoor. AK, you being a naughty man, in this film? Huh? Very naughty. Real और real में कोई comparison है या नहीं है? बिल्कुल naughty नहीं हूँ मैं. अच्छा. क्या बोलना चाहेंगे आपको इस फिल्म के सफर के दौरान आपकी क्या फीलिंग्स थी जुग जुग जियो और ये भी कहना जरूरी है we may not know this, it doesn't sink in actually, but this is actually, and I'm honored for myself to say, this is Anil Kapoor's first film with Dharma Productions. I actually cannot believe that I have loved, known and respected you and we've never worked together. This is just, my father will be so happy. Yeah. Well, thank you so much, all of you all. Meeting you all after such a long time, all of you all being here in such large numbers, all the members, my friends, since, I don't know, almost 35, 40 years, some new, some, who have started 20 years back or 10 years back, all my friends over here, thank you so much for coming. Thank you so much. And of course, yes, I must say that I always wanted to work with your dad, really wanted to work with him. And whenever we met, we would say, ek film. Then he would say, ek film, but we could never work together. And I'm so happy that I worked with the son, who's the best producer, the best anchor, and what do I say? Best in everything, generous,
loving. I've never, you know, I don't know what will this industry be without Karan Johar. I can't imagine the film industry. He gets, you know, so much of joy, so much of warmth, and he, you know, he cares. He's here over here as a, you know, and he's a producer, he's an all-rounder, multi-talented, you know. बहुत ज़्यादा तारीफ करो मैं सर आपकी? Sorry. वरुण बुरा मान जाएगा उसके बारे में. Well, I'll leave it at that, but thank you so much. It's been great working with Dharma Productions. Great, absolutely fantastic working with Raj Mehta, the director. And it's a pleasure, it's an honor, it's a privilege to work with the best. Yeah. How lucky I am that, you know, it's a comeback film, she's working a comeback and I'm there opposite her, you know. Thank you so much, thank you so much. Rest, I think we'll talk a lot of time and we'll discuss, and thank you very much, all of you all. Jug Jug! Jug Jug! Jug Jug! Yeah. एक कहाँ yeah. All right. My journey with her began with lust. And then she became... So my journey began with lust and then she became an absolute must. Because everything we have done with her has been immensely successful. So I think she is definitely the lucky mascot that Dharma Productions has. She's given us good news even though she's been guilty many a time. She's a blessing, literally a blessing, just like Jugjug Jio. And every time, each and every time she has been on screen, she has been spelling pure magic for us at Dharma Productions. And now with a massive weekend behind her, her lucky streak continues. Please welcome Kiara Advani. Kiara, sahi to kaha. We are really a match made in heaven. Yeah, hello everyone. Good afternoon. Thank you all for being here today. I am very, very blessed because this is my third film with Dharma Productions. And what better and what a bigger blessing than to be in a pure family entertainer. I think that's when I remember seeing Kuch Kuch Hota Hai and all Karan's films and being like, I want to be a part of like a Kabhi Khushi Kabhi Gum and a pure family entertainer. And then when my favorite director, Raj, who gave me good news, said we're going to do Jugjug Jio together, I was just like, this is it. This is why I wanted to be an actress. This is what I wanted to do. I wanted to be a part of a pure Hindi film family entertainer. And here we have it. So guys, I can't wait for you all to see our Jugjug Jio because this is us. This is all of us. This is India. This is each and every one of our stories. And Kiara, we love you. You're stunning today. You're stunning always. And you're eternally, absolutely special to all of us at Dharma Productions. Please have a seat. We have so much to talk to you about. Ab now, iske बारे में क्या कहूँ मैं? Literally, अगर मैं कहूँ कि मेरे सामने बड़ा हुआ है, and I have been like a proud principal parent because when this student flew like literally flew with box office bonanzas back to back, it made my heart swell with pride. He is the most lovable person I know and the single most annoying as well. I mean, literally, I think I speak to him more than I speak to my mother, Yash, Ruhi, and every member of Dharma Productions put together. My phone rings every 5 minutes with Varun Dhawan flashing. I get career advice from him. I get marketing advice from him. I get emotional advice from him. So he is not only my son, he's also my parent. Please put your hands together for our beta number 1. Varun Dhawan.
वाह 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 दूल्हे राजा रेडी टू बजाओ बॉक्स ऑफिस के का बैंड एंड बाजा. Always, but first I can't begin to tell you all how good this feels. मुझे इतनी खुशी मिल रही है आज because literally after 2.5 years I have a film of mine releasing in the theaters, and we do this for you guys. Honestly, I became an actor for this, just for this, because I want to do films for this. But before I start, on a very serious note, I have to say that please welcome the newest member of BTS, Karan Johar. Doesn't his hair look great? No, but JUGJUG Jio has been such a special journey. It was very difficult making this film during the pandemic. बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा हमें. And there's only one man I want to give credit to is राज जी, हमारे राज जी जो इधर है. इनकी second film है. Very difficult making a film with so many actors and then pulling it off during the pandemic. So thank you, Raj, honestly. Thank you so much. I have so much love for each and every member of this cast over here, especially working with the Anil Kapoor. Anil Kapoor, just know the lines like you know your mother. Just know the lines, Raj. एक Hollywood चाहिए तेरे को, Hollywood. एक हिंदी मारते चल हिंदी मारते हैं यार, चल. I just love it. And obviously Kiara, जिसने she prayed so much. जब मुझे COVID हुआ था, she was praying so much because she was worried उसको ना हो जाए. And it was just amazing. And obviously coming back with Neetu ma'am. Yeah. One of the best to have ever done it, and the best even till today. She's going to shock all of you all in this film, trust me. And Manish, Paji, this man's on fire. पाजी एक बार आपका वो लाइन बता दो ना टीचर और पापा जी के बारे में. नहीं पापा जी का है ना, पापा जी बहुत मस्ती करते हैं फिल्म में. तो मैं एक बार कहता हूँ बहुत दुख लग रहा है यार, पापा जी का चक्कर चल रहा है यार. कुकू, हम लोग पापा जी की गोद में बैठ के बड़े हुए हैं. आज वो टीचर आके पापा जी की गोद में बैठ गई और पापा जी बड़े हो रहे हैं. और ये लाइन उसने ऐसे ही इम्प्रोव में बोला था और राज और मैंने बोला था नहीं. और फिर हंस भी रहे थे और नहीं भी कर रहे थे. फिर राज ने बोला नहीं ले भाई. ले बस हमने थोड़ा सा हाथ को कंट्रोल कर लिया था. इसने इतने इम्प्रोवाइज किया इसलिए इसको पोस्टर से मैंने काट दिया. अनिल सर, आप मेरा कियारा के बालों के पीछे हल्का सा मेरा हाथ दिख रहा है, आपने कम कटवाया मुझे. ये गलत बात है आपकी. कोई बात नहीं. That will be all. Ladies and gentlemen, we have with us Ajit Andhare, Apurva Mehta, Raj Mehta, Manish Paul, Neetu Kapoor, Anil Kapoor, Kiara Advani, Varun Dhawan. We have 2 Mehtas and 2 Kapoors and the rest of us in the house. All absolutely open to your questions. The house is open. Thank you, ladies and gentlemen, for being here again. Yes, and Karan Johar. Yes. Karan Johar, इसके पहले उन्होंने RRR और KGF 2 का ट्रेलर लॉन्च किया था. तो सोचो कितने बड़े हस्ती है ये. Hi, Anil ji, on your left. Hi. Oh, Hi. अनिल सर, ये आदमी बहुत खतरनाक आदमी है. 2 साल से भूखा है. इसने कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं पूछा है किसी से. रुका हुआ है घर पे. लोग इससे बात नहीं करते, कुछ भी पूछता है ये. वरुण आने से पहले 3 माइक खा गया था, हमने 4था माइक दिया है इसको. अच्छा, पूछ तू. नहीं, कियारा जी को पता है, मैं सवाल पूछ चुका हूँ. अच्छा, क्या पूछना था सवाल? अनिल जी, नीतू जी ने बताया. कियारा जी से क्या पूछना था? अरे इसको पूछने दो यार. पूछ चुका हूँ मैं. अच्छा, पूछ चुका है. हाँ, अनिल जी, नीतू जी ने बताया कि आप बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं, टिप्स देते हैं आप. वरुण धवन ने अभी हाल ही में शादी की है. आई थिंक कियारा भी शादी करने वाली 1-2 सालों में. तो कुछ टिप्स देंगे आप इन्हें, नए कपल को? तेरे माँ बाप गए थे रिश्ता लेके? नहीं. तो फिर कैसे पता तुझे शादी करने वाली है? तू मेरे को थिएटर के बाहर मिले, तेरे को भी टिप्स देता हूँ. शादी नहीं हो रहा है? आई वंडर व्हाई. अरे इन्होंने सवाल पूछा है, प्लीज जवाब तो देने दो. अनिल जी, आप पुराने खिलाड़ी हैं. अरे एक तो ये पुराना वर्ड जो है ना बड़ा पसंद नहीं है मुझे. अच्छा. ये पुराना जैसे आया करण ने मेरे पांव पड़े तो मैं एकदम हिल गया. ये सब चीजें मुझे पसंद नहीं है. हाँ बोलो, आप नए. अच्छा, आप खिलाड़ी हैं? नए खिलाड़ी हैं
और नया क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या टिप्स देना क्या चाहेंगे? आप खिलाड़ी हैं, वरुण धवन अनाड़ी है, क्या कहेंगे आप? आपने बोला था ना 2-2 फोन रखो। बस यही है कि आप फिल्म देखिए जुग जुग जियो, और आपको मैंने काफ़ी टिप्स दिए हैं उस फिल्म के अंदर, तो आई डोंट वांट टू टेक द क्या बोलते हैं एक्साइटमेंट अवे, सो प्लीज़ वॉच द फिल्म जुग जुग जियो। मेरा कैरेक्टर ही, किरदार ही ऐसा है कि मैं सबको टिप्स ही देता रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जी मैं कियारा जी, स्टेज पे जितने भी लोग हैं सभी की शादियां हो गई है, जितना मैं नोटिस कर रहा हूँ, सभी वेल सेटल हैं, तो आप बताइए कि भाई इनकी नहीं हुई है, भैया तो क्यों? अच्छा सॉरी सर, आपकी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। कियारा जी, तो हम भी और well मेरी settled शादी हैं। के बारे में आपने कुछ नहीं पूछा, मैं 50 का होने जा रहा हूँ। क्या क्या सर क्या लगता है कि मैं शादी के काबिल नहीं हूँ? आप सर सर शादी के काबिल हैं आप, तो भैया सर बाल भी खड़े करके हम आए। भी शादी कर सकते हैं। आप मल्टी टैलेंटेड हैं सर। शादी कोई टैलेंट नहीं, मजबूरी होती है सर। हाय कियारा जी, आप यार जी आप बताइए कब कोई शादी प्लान्स? बिना शादी की भी मैं वेल सेटल्ड हो सकती हूँ, राइट? मैं वेल सेटल्ड हूँ, मैं काम कर रही हूँ, कमा रही हूँ, मैं खुश हूँ। वाह, वरुण जी, बोल भाई। तो तकरीबन एक आखिरी सवाल, सभी को सवाल पूछना, बाकियों को भी तकरीबन मौका- कितने पैक लिए होंगे आपने इस फिल्म में? कितने? कितने पैसे? पैक्स? अच्छा वो ड्रिंकिंग, सो ही इज टॉकिंग बिल्कुल, अबाउट द बिल्कुल, ड्रिंकिंग सीन। drink। ड्रिंकिंग सीन ड्रिंक। सो इनिशियली जब हम लोग वो सीन कर रहे थे तो आई डिड वांट टू, मुझे पीना था अनिल सर के साथ। मैंने बोला एक दो, बिकॉज इट वाज वन ऑफ द अर्ली सीन्स हम लोग जो कर रहे थे, और अनिल सर ने बोला कि नहीं नहीं यार एक्टिंग करेंगे, यू डोंट नीड टू हैव। और फिर बहुत राज को बहुत फोर्स करने के बाद इवेंचुअली हमें थोड़ा सा मैंने तो नहीं पिया, तूने पिया। नहीं थोड़ा थोड़ा हम लोग ने पिया। नहीं मैंने नहीं, ये वरुण ने पिया। मैंने एक्चुअली इस फिल्म में काफी पिया है ना राज। What? Because Raj is a big drinker also of water and a lot of aerated drinks. राज एक्चुअली कंफ्यूज भी हो गए थे, इतना पी रहे थे, मैंने कहा जुग जुग I had to stop him. I had to stop you from drinking firstly. अरे but it was for the scene यार. क्या Hi, क्या? Varun, hi, Himesh this side. What's up Himesh? Hi. Firstly, congratulations. The trailer is simply fantastic. Thank you, thank you. So, my question is to Varun. How does it feel to return to this? You know, your last few theatrical films were thoda serious, and on those, how does it feel to be a dulha again on screen? Nervous, for sure. But this film is always going to be special to me for one reason, because this is the last film that Manoj, who is like my brother, my friend, my everything in my life, it was the last film that he was with me on this, and that's why Jugjug Jio is always going to be one of the most special films I've ever done, because he was with me when we shot internationally, he was with me when throughout this journey of this film. So I just feel that his blessings are there in this film, and that's why it's literally the most special film for me right now. And next question is to Apurva, Karan. Anyone can answer this. You know, this is your first theatrical release after the pandemic. How does it feel, and what were the challenges of holding on to the film for 2 years? Yeah. So as you know that, it was a challenging time for most of us in the business, and there were certain decisions that we took in the past, for films that we had to go straight to digital because we had tried, and there was an ambiguity. With Jugjug Jio, we still had shooting left. So we actually wrapped up that film much later, and then the climate changed, films opened, we saw that there was potential in theatrical business, and we thought that the very first film that Dharma Production should come out with should be a burst of color, a burst of celebration, a full of family, full of love, and be an all-round entertainer, which has music in huge measure, entertainment in huge measure. And so we thought that to open the box office gates for us at Dharma Productions, there couldn't be a better and bigger film than Jugjug Jio, and so here we are. Hi, Sanjay Mishra this side, Navbharat Times Online. करण, आप जब भी बोलते हैं कुछ भी तो बहुत ही ध्यान से मैं सुनता हूँ, क्योंकि आप जब कुछ बोलते हैं तो इंडस्ट्री का चलन भी बदलता है। जितना खूबसूरत आपकी फिल्म का ट्रेलर है उतना ही खूबसूरत स्टेज भी है आज। तो आपने और कियारा ने जब बातचीत शुरू की तो एक बात जोर देकर कही कि हिंदी फिल्म ट्रेलर, हिंदी फिल्म, इस तरह की बातचीत की। तो ये जो हिंदी फिल्म पे जोर था, क्या ये बताने की ज़रूरत थी कि मतलब थोड़े दिनों से जो दूसरी फिल्में हैं, साउथ की फिल्में, वो अच्छा काम कर रही हैं, तो हम भी अच्छा करेंगे? मतलब मैं इसको समझना चाहता हूँ।
देखिए ऐसा तो नहीं, हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी सिनेमा का हिस्सा हैं। तो जब आरआरआर और केजीएफ और पुष्पा ने इतने कमाल धमाल का बिजनेस दिखाया है, तो हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी सिनेमा है, इट इज इंडियन सिनेमा। हम ये जब हमने मैंने जब एंड वी आर प्राउड ऑफ ऑल दोस फिल्म्स, वी आर प्राउड ऑफ इंडियन सिनेमा। उन्होंने एक्चुअली इंडियन सिनेमा का दर्जा और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। प्रशांत नील साहब, राजामौली सर, सुकुमार and KGF, all that has just completely told us कि हमारा स्टैंडर्ड इतना बड़ा हो सकता है और इतना हम आगे जा सकते हैं। जब हमने हिंदी को स्पेसिफाई किया तो इट इज रियली अ फंक्शन ऑफ टेक्निकलिटी, क्योंकि हम जो है कि हिंदी सिनेमा में अभी लास्ट हफ्ते अब गंगूबाई ने इतनी सॉलिड बिजनेस की थी, भूल भुलैया ने इतनी सॉलिड ओपनिंग ली है, और अब हमारी यही इच्छा है, आशा है कि जुग जुग जियो भी उसी लिस्ट का हिस्सा बन जाए। हम ये भी चाहते हैं कि हर भाषा की फिल्म चले और हमारी फिल्में भी चले, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है कि जब भी हम एंटरटेन करते हैं तो वो चाहे कोई भी भाषा हो, तमिल हो या तेलुगु हो, मराठी हो। अगर आपने नोटिस किया, पंजाबी सिनेमा ने इतनी बड़ी हिट दी है लास्ट वीक, फिर मराठी सिनेमा उसी हफ्ते ने भी इट डिड सो सुपर्बली। तो वी वांट दैट, वी डोंट वांट एनी लैंग्वेज and it to be kind of compared to each other, but we just want to say कि we are proud of Indian cinema, और हम यही चाहते हैं कि हिंदुस्तानी सिनेमा अभी आगे बढ़ते जाए, and we are always on the entertainment of the entertainment global map. Karan, do you mean to say that there is do you mean to say कि there is no competition here, Karan? There is no, you don't believe in competition between South and not at all. Hindi cinema. In fact, if you remember, ma'am, in 2000, many years ago, I presented Bahubali. In fact, Yeah. I had that huge faith in the power of cinema. There is no competition between the same industry. How can they be? We grow together. We don't, to compete would be completely not servicing the requirements of entertainment in the industry. We have to be one collective unit. And Rajamouli sir has said that many times. We should be one cinema. And in fact, the best crossover is the crossover that has happened recently, is when the South has done such expansive business in the North. That is crossover. Going to any festival, winning an Oscar does not matter to us. We want to grow as Indian cinema, and that is being proven time and again. In fact, when these things happen, I feel it unites the country even more. And that's the most important purpose I think cinema can do. You know, it can unite the entire country together. So I think it's amazing. Raj, my question to you is that good news बनाई थी आपने, वो भी पंजाबी बैकड्रॉप था, ये भी पंजाबी बैकड्रॉप है, कोई खास वजह? Ma'am, could be subconsciously because I'm a Punjabi myself, or I don't think that was a thought it wasn't deliberate at all. It just so happened that this story, when it came to me, was set in that backdrop, and I thought flavorful log hote hain by nature, so it would add that, you know, so that's how it is. It wasn't subconscious or deliberate at all. Neetu ji, welcome back after a long gap. This is your comeback film. What do you have to say? What do I have to say? This has been the best experience for me. You know, this is something which helped me with whatever circumstances I was going through. So I really thank Karan and Raj for guiding me and for having such wonderful cast who were always there to support me, because mere liye to it was again like a new place, you know. So everybody was so nice, so supportive, and this movie will always be very, very, very special to me. Very, very, very special. And I'm very proud of this movie. I'm very proud. What was Ranveer's reaction? Ranveer hasn't seen the as yet or the trailer, because we just released the trailer. But he's going to love it. He's going to absolutely love it. There's nothing that you can't love about this film. Anil ji, ma'am, we'll just take this question, then we have a special announcement to make. Yes, ma'am, please go ahead with your question, and then we have an announcement. Anil ji, namaste. Neetu ji, namaste. Rekha Khan, Navbharat Times से. यहाँ पर right में. Sorry, left में. रेखा जी नमस्ते. नमस्ते. ट्रेलर बहुत अच्छा है. मैं पूरी टीम को बहुत सारी बधाई देना चाहूँगी. ट्रेलर में देखने को मिला कि आप डिवोर्स लेने पर आमादा हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में अनिल जी आप और नीतू जी आप एक बहुत ही कहते हैं ना कि सॉलिड जो मैरिज होती है, मैरिज इंस्टीट्यूशन है, उसकी आप लोग एक मिसाल रहे हैं.
और इन दिनों हम देख रहे हैं कि डिवोर्स रेट चाहे हमारी इंडस्ट्री हो या आम जिंदगी हो बहुत बढ़ गई है। तो आप एक सॉलिड एक अच्छी शादी के लिए या मैरिज इंस्टीट्यूट के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये सवाल अनिल जी आपसे बिल्कुल बनता है। अभी हाल ही में आपकी एनिवर्सरी भी थी जी। बस मैं यही कहूँगा कि I think everybody is happy in their own space. Whatever divorce, I'm not against divorce at all. अगर दो इंसान, if they don't really get along, I think they should part and amicably. There's nothing wrong in that. And if you live and you're happy with your marriage, why not? And if you want to be a bachelor all your life, why not? अगर आज लड़का नहीं शादी करना चाहता, लड़की भी नहीं शादी करना चाहती और खुश है, I'm happy with that. I have never ever, I feel today's world is such that everybody should live happily, no matter, क्या है उनकी, what is their liking, what is their dislikes. That's up to them. That is their choices. They should make their own choice. And I have believed in it, not now, from the time I came into my senses. Yeah, absolutely. Thank you, Vicky. Sorry, I'll have to just break the momentum. We actually have fans watching a live interaction of Jugjug Jio from 3 cities, from Ahmedabad, Delhi, and Jaipur. Can we please meet them? They've been very relentlessly waiting and watching. We move this? Yes, can we? No. They're on TV. They've been virtually with us across 3 cities, Ahmedabad, Delhi, and Jaipur. We will actually start with Ahmedabad. That's your TV, Karan. I said, hello, this is Ahmedabad. Yes, yes. Hello, hello, hi. Hey guys, what's up? Hey guys. Hi this guys. is from Ahmedabad. What is your name, ma'am? Ekdam jalsa ma. What? Hello, hello. Hello. हेलो सर, हेलो हम अहमदाबाद से, हम सब ने आपका ट्रेलर देखा, हम बहुत 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 ही एक्साइटेड हैं, हम मूवी का इंतजार कर रहे हैं। बस ये 22 जून आए और हम आपका मूवी देखें। यहाँ पे बहुत सारे चाहक हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। करण जौहर जी के चाहक? जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे चाहत कोई नहीं है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। वरुण सर, कियारा मैम, अनिल सर एंड नीतू मैम, आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूं मैं, वो है कि आप सब अहमदाबाद कब आ रहे हैं? कियारा। Karan, Apurva sir, when are we going to Ahmedabad? Marketing team promotions. हम जरूर आ रहे हैं. The team of Jugjug Jio, boys and girls, will be in Ahmedabad very very soon. हमारे marketing के plans बन चुके हैं. And I'm glad to say that Ahmedabad, one of our favorite cities, is very much part of our plan. We're going to see you soon. 100% हम लोग I think June 10, June 12 को आएंगे. करण जौहर जी को भी लेके आएंगे, क्योंकि आप उनके प्रशंसक हैं। भैया डेट ले लो करण जी की। आप जरूर हमारे अहमदाबाद में आइए, हम आपका इंतजार करेंगे। और दूसरे भी चाहक हैं जो आपसे पूछना चाहेंगे। अनिल सर, आपसे एक सवाल है। हाँ जी, पूछिए। Can they hear? यार मेरा पोस्टर नजर नहीं आ रहा है यार। आपका उल्टा है पोस्टर। हेलो जरा थोड़ा आगे लेके आओ यार, बीच में लेके आओ। हाँ या अभी अच्छा लग रहा है, अभी मैं इसका जवाब। हाँ जी। थैंक यू। सुन रहे हैं ना आप लोग क्या बोला है? आप लोग सुन रहे हैं ना क्या बोला? बोला बहुत हैंडसम लग रहा हूँ। हाँ जी, क्या सवाल है आपका? क्या सवाल है? अनिल, क्या हम हमारे लिए झकास बोल सकते हैं? ये यार अरे मैं तो अहमदाबाद, गुजराती खाना, गुजराती लोग, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, आई जस्ट लव ऑल द सिटीज। मैं सबके लिए, पूरे जितने भी आप लोग यहाँ हैं, सबको मैं बोलूंगा एकदम झकास। All right, thank you. All right, thank you Ahmedabad. Thank you so much for all the love. Can we now tune in? Can you now tune in to Delhi? दिल्ली शहर, हम आपसे मिलना चाहते हैं। हेलो दिल्ली। यार दिल्ली में भी मेरा पोस्टर नहीं है यार। सर है पीछे। Guys, can you love you? Hi, and we love you too.
अनिल जी का पोस्टर कहाँ है? वो बोल रहे हैं कि नहीं है उनका पोस्टर। हाँ और नजर आए एकदम पीछे है सारा। पोस्टर एकदम पीछे है मेरा। अच्छा, थैंक यू सो मच। आपका क्या सवाल है दिल्ली शहर, आप पूछना चाहेंगे हमसे? टू द टीम ऑफ जुगजुग जियो। तो दिल्ली आपका स्वागत करिए। We are so excited, so excited. Yay! We are very excited. We love you. We love the trailer. और क्या? हाँ, बहुत। कब आएंगे आप दिल्ली? मैं लिपसिंग देख रहा हूँ इनकी। और प्लीज आइए, हम आ रहे दिल्ली आएंगे तो हम बहुत खुश होंगे। थैंक यू वेरी मच। एवरीबडी इज कम फॉर ऑल ऑफ यू ऑल। ये अभी आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी, पूछिए पूछिए। नहीं बिठाओ मत। मैं लिपसिंग पढ़ रहा हूँ। हेलो हेलो, हाँ मैं लिपसिंग पढ़, डोंट वरी। हाँ जी, हाँ ये है, यस ये अशोक है, अशोक। हाँ जी। We have all seen your hard work in the gym. Your action sequence in मैं तेरा हीरो was amazing. You're fantastic, Varun. I love you. बहुत जबरदस्त। वेट कर रहा था मैं, 2.5 साल से वेट कर रहा हूँ। आपकी फिल्म कब रिलीज होगी? जुग जुग जियो। क्या कहना चाहेंगे वरुण जी? तो ये क्या आपका सवाल क्या है वरुण जी? अरे मैंने दे दिया लिपसिंग करके बोल दिया। हैं? बाद में you'll have to let वो him कहना talk. चाह कुछ रहे नहीं आ रहा। जुग जुग जियो। Food है। What's my favorite food? I love eating pizzas are the food. What? But he's not asking. He's asking a food. देखा, मैंने बोला था मुझे ये काम करने दो। अच्छा सर, मैंने बोला आपको नहीं आता है, ये नहीं आता। मैं कर रहा हूँ अच्छी क्या तरह कर रहा question हूँ था ना। सर? मैं अब एंकर करते मैं इंटरफेयर किया? नहीं। ये तो वरुण जी आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपकी फिल्म रिलीज हो रही है। उन्होंने यही कहा था 2 साल के बाद आप जिम में जाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं। Move to the next question. We have one more kid. Very excited to ask. Ma'am, आपके लिए question we have another person. Please go ahead. Hello, Kiara ma'am. This is Karshni from Catch MS. First of all, I would like to say that you look lovely in Shershah. Since you often visit Delhi, what's your favorite memory in Delhi? Hi, Darshini. Well, what's my favorite memory in Delhi would be, I think, just eating all the street food. Like, just having, like, what do you all call pani puri? Golgappe. गोलगप्पे खाना बड़ा पसंद है। चना भटूरा? चना भटूरा सब खाती हूँ, दिखता नहीं है सो। Okay, yay! Thank you, Delhi. Thank you, Delhi. Thank you, Delhi. One more time. This is everyone wanted to do this. Jug jug. जियो! थैंक गॉड ये साउंड शुरू हो गया। जुग जुग जियो। Thank you guys. Thank you. We love you. Thank you, Delhi. Lovely. Now, thank you, Delhi. Thank you. We love you, and we can't wait for you to see the film. Can we move to our third and final city, Jaipur, the pink city of our country, Jaipur? Arey वाह! Namaskar, Jaipur. Hi. Come on. Kumbhagani. Hi sir, myself Archie Gaurav from Jaipur. Now we are Jaipur Rights and we want to show our energy level. I like Jaipur. My photos in the front. Jaipur Rights, show your energy level with the full of energy. I am coming. इन लोग आए नहीं आए, मैं आ रहा हूँ जयपुर। Okay, sir, one more time we want to show your our energy level. One more time. Ask- Jug, jug. And seriously, Jaipur is we the are best. huge fans of yours. In fact, हम We लोग want to जयपुर talk to पहला you. गाना लॉन्च करने आ रहे हैं। अरे आ रहे? हाँ, प्लान सब बाद में बताइए। पहले सवाल तो पूछ लो। First of all, congratulations, Varun sir. And my question to Varun sir is, आप जयपुर कब आ रहे हो और कब आ रहे हो हमसे मिलने के लिए? तो- We are so excited for तो you वरुण to meet you in Jaipur. वरुण बताइए आपका शेड्यूल। हम लोग 28th of May को जयपुर आ रहे हैं to launch a very special track called रंगी सारी, जिसपे करण जौहर जी ने बहुत पैसे डाले हैं। और उसके बाद एक बहुत स्पेशल रील करण सर का भी निकलेगा रंगी सारी पे।
हाँ मैं Are you ready for that? रंगी सारी रंगी सारी आप गाइए मत। थैंक यू। सो जैसे वरुण ने कहा 28 तारीख को वी विल बी कमिंग टू जयपुर एंड बहुत फेवरेट सिटी है अनिल जी का। हेलो अमित जी का अनिल जी का फेवरेट सिटी है, पोस्टर आ गया है। हेलो नीतू मैम। सो माय नेम इज गुरमंत एंड आई एम फ्रॉम आनंद आईसी। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, रियल लाइफ में आपकी मूवी का नाम जुग जुग जियो है, तो रियल लाइफ में आपने रणबीर और आलिया को जुग जुग जियो बोल दिया क्या? अरे क्यों नहीं बोलेंगी? मैं अपने बच्चों को जुग जुग जियो क्यों नहीं बोलूंगी? उनको तो सदाबहार जुग जुग जियो। वाह। चलिए, थैंक यू जयपुर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ladies and gentlemen, members of the media, prolific members of the cast, thank you so much, pillars of our film, thank you so much. Can we now request the lead members of this panel and stage to stand up for a final photo? He's getting angry, Karan, he wants to ask. हाँ? उनको सवाल पूछना। आपका सवाल, अच्छा आखिरी सवाल आप पूछ लीजिए। हेलो। हाँ पूछो। वरुण सर, योर राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। मेरा सवाल ये था कि ट्रेलर में देखा मैंने कि आपने बताया कि इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल घरवाली होती है, हर रोज मनाना पड़ता है। तो कितना % एग्री करते हैं और आपको दिन में कितनी बार मनाना पड़ता है? 100% मतलब दूसरों के जो घर वाली है उनको तो मनाना ही पड़ेगा ना उनको। मैं तो आप दूसरों के घर की घरवालियों को क्यों मना रहे हो? अरे मैं अपने बारे में बात करूंगा तो मेरे को घर पे आंसर देना पड़ेगा ना फिर। नहीं, इधर बहुत सारे शादीशुदा मर्द है और औरत भी है। आप लोग बताइए, आपको मनाना पड़ता है एक दूसरे को? हु से सॉरी फर्स्ट? मर्द सॉरी पहले बोलता है, औरत सॉरी पहले बोलती है। हाँ वरुण, they want your answer. आपको मनाना पड़ता है बार बार? हाँ, मैं सॉरी बोल देता हूँ भाई। मैं बहुत मिस्टेक्स होती है मेरे साथ, मैं इंसान हूँ तो मैं सीधा सॉरी बोल देता हूँ। Thank you very much on that wonderful note of Varun. Karan, even he wants to ask. He's feeling bad, Karan. हाँ जी सर। हाँ जी, अनिल जी आपको कोई टिप्स नहीं देंगे, आप रमेश जी के पास जाइए। This is Sohail here from Instant Bollywood. What's up, Sohail? अनिल जी, अभी कुछ वक्त के बाद like you know you are going to become Nana. तो ये जो वर्ड है जुग जुग जियो, आप कितना वेट कर रहे हो इस वर्ड को बोलने के लिए? देखिए, अभी पूरी दुनिया के सामने आप मुझे नाना बना रहे हो। मैंने काफ़ी कोशिश की कि उसको मैं इस रिलीज के बाद ज़्यादा इसकी, क्योंकि इस फिल्म में मैं सिर्फ फादर हूँ। नाना नेक्स्ट पार्ट 2 में नाना बनूंगा, बट डेफिनेटली इट्स बहुत खुशी की बात है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई वांट ऑल योर गुड विशेस to everybody. No, before going ahead, I think I'm also seeing Komal ji. Jugjug Jio. Komal, one question you have to ask. I'm seeing you after so long. मेरा क्वेश्चन है कियारा जी को also. कियारा जी, with each and every film. पर ये नानी थोड़ी बनने वाली है। हर फिल्म के साथ आप सक्सेस की लेदर चढ़ रहे हैं and you are on the top at the box office. Do you believe that thing, like you know you are? Do you believe that you're number one, the biggest actress in this industry right now? Do you believe that you're on the top of the ladder, the top of the food chain? What do you feel? Everyone goes for Jugjug Jio, then I'll believe it. हेलो, मेरा सवाल अनिल जी से है कि वो नॉटी है हमेशा से। मैम किधर आप? मैम यहाँ हैं। देखिए, ये मेरा अंकल, मेरा एक ही टिप है। She's saying you're naughty. Sorry, सब बोल रहे naughty हो आप नॉटी है लेकिन हमेशा से और अभी भी। नॉटी हो आप सर? मैं आज मैं ऑनेस्टली बोल देता हूँ। देखिए, ये ऑनेस्टली बोल देता हूँ, मेरी पत्नी जो है हिंदुस्तान में है नहीं और वो शायद होपफुली नहीं देखेगी। मैं बचपन से नॉटी हूँ और नॉटी ही रहूंगा। हेलो, मेरा सवाल मनीष पॉल जी से है। वो भी नॉटी है। जी भी बहुत नॉटी है, वो तो है ही। तो आप इतने अच्छी स्टार कास्ट के साथ और करण जौहर जैसे, करण जौहर जी भी नॉटी है, बोल दीजिए। कैसा लग रहा है आपको? इतना बड़ा ब्रेक मिला है। यार ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने कहा, एवरीबडी वांट्स टू डू अ फिल्म विद धर्मा। आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये फिल्म जैसे ही मेरे पास आई थी, मैं सबको बोलता हूँ, मुझे उन्होंने कहा नीतू जी है, मैं बहुत एक्साइटेड हुआ। वरुण, आई वाज वेरी एक्साइटेड। कियारा, आई वाज रियली एक्साइटेड। करण जौहर सर प्रोड्यूस कर रहे हैं, राज सर डायरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा इस फिल्म में अनिल कपूर, मैंने कहा ये फिल्म कर रहा हूँ। तो मैं बार बार बोलता हूँ, सर के लिए ये फिल्म मैंने करी है एंड आई थिंक आई हैव हैड अ ग्रेट टाइम। और वो जो हमने मस्ती करी है, मजा किया, आई थिंक वो ऑन स्क्रीन आप लोग देखेंगे एंड आई होप आप लोग एंजॉय करें। We love mostly same, we miss her as well. Yes. We love you, Prajakta. Okay. Anil sir. Thank you. We'll have to close that. Please, we have another activity. We have the photographs. Mike को ले ले। Komal, you didn't ask any question, huh?